क्वेश्चन हियर इज कि एक्शन और विजन में मतलब डिफरेंस क्यों हो जाता है? मैं कुछ एनविजन करता हूं और मैं उसे एक्ट में नहीं डाल पाता, क्यों नहीं होता? दो वर्ड्स, डिसिप्लिन ऑफ डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू व्हेन इट इज रिक्वायर्ड टू डू, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। इसे हिंदी में कहता हूं, जो चीज जब करनी है वो तब करनी है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपका मूड हो या ना हो। जब आप इस रिदम में रहते हो तब आप डिसिप्लिन रहते हो, और जब डिसिप्लिन तरीके से कोई चीज हो रही है तो विजन को अचीव करने में आसानी होती है। एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड ऑन द एंटरप्रेन्योर्स स्टेबिलिटी, एंटरप्रेन्योर्स मेंटालिटी, वो लीडर्स मेंटालिटी, लीडर्स स्टेबिलिटी, हाउ ही इज लुकिंग एट थिंग, व्हाट डज ही ईट, हाउ डज ही लिव, all of that, because that brings you discipline. So that's point number 1 to remember, that without discipline you cannot achieve the vision that you have. That's point number 1. The second difference is कि मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं इसे मैं आगे जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं, तो शायद मेरे पास कोई मेजरिंग मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है जो मुझे ये बताती है। इसको अगर समझना है, बड़ी आसान तरीका है। व्हेन यू ट्रैवल लेट नाइट, अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपको आप रोड पे जाते हो तो यू सी दोज माइलस्टोन्स कि मैं 100 किलोमीटर हूँ, 50 किलोमीटर हूँ, 40 किलोमीटर हूँ, तो उससे ना आपको एक फीलिंग आती रहती है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। जिस संस्था में, जिस एंटरप्रेन्योर के पास वो डैशबोर्ड नहीं है, वो हमेशा तकलीफ में रहेगा उसकी विजन को अचीव करने के लिए। सो व्हाट आर द 2 पॉइंट्स? योर एक्सट्रीम डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, and second, and I'm stressing this, extreme is what I'm saying, extreme discipline, okay? And second, your measuring system, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप आगे जा रहे हो, आप वहीं पे रुके हो या आप पीछे जा रहे हो। अगर ये दो चीजों को सही मैच किया गया, there is nothing that whatever you envision cannot be achieved. So in this video, the whole game is about understanding these two things. Don't forget that, all right? Be disciplined and have your measuring and monitoring system very right. क्योंकि गलत चीज को मेजर करोगे तो गलत दिशा में चले जाओगे, गलत चीज को मॉनिटर करोगे तो गलत दिशा में चले जाओगे। So it's very important that you measure right and you should know what to measure in company. Now I'll give you an example of what to measure. How do you know that your employees are happy? How do you know that you're making money every day? How do you know that you are ample amount of staffing that is there? How do you know that this is the money that are required in running the business? How do you know that what is the kind of cash flow, and is there a traction of cash flow that you have in the next 3 months? At least a quarter, bare minimum. Okay? How do you know that my system of say ERP, say CRM, say HRMS, ये जो सारी systems होती हैं, ये systems मुझे सही output दे रही है, क्या आपने उसके सही input डाले हुए हैं? जब तक इन सारी चीज़ों को सही तरीके से measure नहीं किया जाता और उसे overall align नहीं किया जाता आपकी रणनीति के साथ, या जिसे हम strategy कहते हैं उसके साथ, तब तक वो vision achievement is extremely difficult. Whatever you want to scale up, please remember, first envision it, look at the strategic milestones you want to achieve, and only be disciplined in achieving those strategic milestones. Don't try to get too many things at the same time and it never happens. So my recommendation for anybody who's trying to draft their budgets, their vision for the next year, which is 22-23, is only have 5 or 6 strategic milestones that you want to achieve in the 12 months or 4 quarters, and only focus on them. You will get a lot of opportunities, and every time you will feel ये opportunity भी अच्छी है, वो भी अच्छी है, but don't go for that, because whatever you have envisioned, first achieve that. If you're not able to achieve that, keep doing that till you achieve it, and only then you will see that the magic of discipline, the magic of measuring and monitoring yourself and your business will give you the results that you've never even dreamed. Because ये इतना powerful है और वो इतना ही boring भी है. Let me tell you why it is boring. Because रोज उठ के वही चीज करना ये आसान काम तो है नहीं. What is the difference between a man who's successful or a business who's successful and a business who's not successful? A business who's successful has found a formula. They have found a formula of how they make money, how they make people happy around them,
how they ensure that everybody is satisfied or delighted. उस फॉर्मूला को उन्होंने रिप्लिकेट कर दिया है. अगर आप उस फॉर्मूला को रिप्लिकेट नहीं कर पाए तो स्केल अप कहां से होगा? सो पहले तो वो फॉर्मूला ढूंढना और उसे रिप्लिकेट करने के लिए एक स्ट्रक्चर में सारी चीजें बिठाना और उसको बजट अलाइन करके उस बजट को मॉनिटर करना, ये आपकी सबसे पहली जॉब है या इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ प्रायोरिटी है जब आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस चला रहे हैं. नाउ मोर इंपॉर्टेंटली, in order for you to do all of this, you can join us at Aarambh. Okay, Aarambh is the annual operating plan workshop that we conduct. Now this workshop actually focuses on a lot of things: your strategy for the next year, your money that is required, your cost that is driven, your raw material pricing, your sales funneling, your digital marketing, your marketing at above the line, your people budget, your training budget. All of these budgets will come in place. तो आपके सामने ना एक आंकड़ा दिखता है, एक नंबर दिखता है कि अगर मैं 10 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ करना चाहता हूं तो ये है नंबर जो मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि मैं वो 10 15 20 करोड़ पे जाऊं. अगर ये फ्रीज हो गया तो you will see the magic happening in your business. Now this magic we call it as Aarambh. Aarambh इसीलिए क्योंकि नए साल की शुरुआत, नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत, और ये स्कूल ऑफ इंस्पिरेशनल लीडरशिप हर साल करता है. इस बार ये पूरा डिजिटल है, which means you can join us across the nation. So don't stop, join us across the nation, because realize one fact, that unless and until you don't envision, you don't be disciplined every day, and you don't measure and monitor the right things required for your business, you will not scale up. So rather than telling you how to scale up, I am more happy to share why aren't you scaling up. Now if you think there is some meaning in it, there is a link below. You got to click that link. Make sure that you look at all the information that is there on the web page. If you really feel that we are worth it, please join us, and happy scaling up. Always in journey with you. This is Dr. Yogesh Pawar, founder of School of Inspirational Leadership, wishing you happy scaling up.